Yes, yes, sure, sure. Uh, I'll request our president, Parag Putra, to officially welcome you all, and we start the session. This session will be available on YouTube, our channel, Rajkot Management Association YouTube channel, and it is also recorded and we'll also post it on our Facebook page. So yeah, over to you, Yes, Parag. sure, sure. Yeah, thank you, Forum. Thank you so much. And very good morning to all our friends joining from all over India and well wishers, members of RMA, and all my friends in executive committee today on this very important topic. Uh, I am taking a little bit of liberty today, being Chetan by a very good friend of mine. And normally on such a platform, we introduce him what he has professionally achieved. But I would take this liberty to give you some glimpse of what he exactly is, knowing him since last 12-15 years. So his introduction per se is I've just pasted in the chat box. But let me introduce Chetan Bhai in a little bit different way. Uh, Chetan Bhai is always in kind of a startup mode. When I say startup mode, he like working as far as RMA is concerned, Rajkot Management Association is concerned. He never, believes in the designation per se that I am a president or I'm a chairman of the association, but always like to willing to go out of the boundaries and uh, take, all sorts of assignment, be it presenting RMA or promoting some programs, designing some programs, or whatever like. So, he is always kind of a, startup mode. Uh, uh, I'm getting a message you are muted by host. Am I audible? Yeah. Yeah. Yeah, sure. So he is always on a startup mode, and Rajkot Management Association, the second inning or third inning, whatever we call, Chetan Bhai, led it very nicely way back in 2008. Whatever image Rajkot Management Association today we have, the members we have, a lot of credit goes to him being building Rajkot Management Associations, the new image, the modern image, what we call. So that is what Chetan Bhai is. And you just heard, like Jagjit Singh, like few lines, but he is a very good singer. He loves to write, he loves to sing, he loves to crack jokes, and more importantly, he repeats the joke with the same enthusiasm. So, never ever out of energy. So that's what Chetan Bhai is. Always handle, like all the situation, difficult people with such an energy, such a zeal, such a common sense, full of humor. And I know certain personal examples also. I know his wife also. So, like he can handle everything, he can manage everyone, unlike us. So that's what Chetan Bhai is. I can go on and on. Let me just tell you the image of Rajkot Management Association all over India with all our friends in IMA and local management association. He took the lead and presented Rajkot Management Association in such a way that now, like we are in those big leagues also. So, Chetan Bhai, welcome you to this session. I am sure, like, this session, everybody is going to, enjoy. See, words and content is something, but a good friend always help the client and the friends in the intent part also. So today we would not only would like to love words and content part of the session, but request you to like go on with the intent part of it also. So thank you very much. Welcome Chetan Bhai and all. Let's begin the session. Thank you so much. Thank you, Parag Bhai. Thank you for your wonderful words for me, which probably I think undeserving. But whatever little we can give back to the society, that is probably what life is worthwhile. To start with this wonderful session of exciting people all joining and just having a curiosity
about the legal part of the will. I would like to start with a wonderful story which just now I have read before few days, that a gentleman in UK called up his attorney और बोले कि मेरे को मेरा विल करना है. अटर्नी से बोली आप क्या क्या इसमें किसको देना चाहेंगे. 1 लाख पाउंड जो मेरे जो फिक्स्ड है उसको दूंगा, और उनको ये करना है कि जब भी मेरा फ्यूनरल निकले तभी मेरे कॉफिन के अंदर वो $1 लाख उनको रख देने का है. ओके फाइन, देन $1 लाख टू माय डॉक्टर. उसको क्या करना है, वो भी $1 लाख कॉफिन में जब जनाजा निकले तब डाल दें. Absolutely fine. And for the lawyer, yeah, you are also getting $1 lakh, and you also need to put it in the coffin when the funeral starts. So at the deathbed, every recipient is being called up, and they are being said that now you have £1 lakh, $1 lakh, £1 lakh, and tomorrow there will be a funeral. You have to put it in the coffin, and then the funeral will start. All were ready for the funeral. Next day, the funeral started. First, the priest has come in a bag. He put that bag inside the coffin. Then the doctor came. Doctor also put his bag in the coffin. And then the lawyer came. He came with a small envelope, and he also put it inside the coffin. Then after the funeral is over, all three joined together और एक साथ बात कर रहे हैं कि प्रिस्ट कह रहा है कि मेरे को एक चीज एडमिट करनी है. $1 लाख उन्होंने बोला था, लेकिन मैंने इसमें से $20,000 मेरे लिए रख लिए हैं. इतना मुझे सीन करना सही लग रहा है, तो 20,000 रख लिया, 80,000 उसमें डाल दिया. डॉक्टर कहा उसने मेरी जान खा ली थी और मेरे को कभी सही तरह से पी नहीं दे रहा. मैंने $50,000 रख लिया है और $50,000 मैंने उसमें डाल दिया है. लॉयर सेज oh, that's fine. मैं भी इस तरह से डिसऑनेस्टी करना चाह रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि ये बहुत गलत बात है. मरते हुए आदमी की जो भी इच्छा है उसको पूरा करना चाहिए, तो मैंने $1 लाख का चेक लिख के कॉफिन में डाल दिया है. तो लॉयर्स आर प्रोबेबली टेकन द लाइफ टू अ नेक्स्ट लेवल. ये बिल्कुल सिंपल और इजी थिंग की बात हम कर रहे हैं, जो कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे अनकंफर्टेबल है. Everybody knows that to do exercise is the most healthy thing, but very few do it because the exercise is the most uncomfortable thing what we feel like per se. So similarly, whatever the best earned money and the properties and the belongings for which we have struggled for all of the life, we do not create a will, and we just make the asset a liability. So to do a will, to create a will is the most important and most important thing for the future generation. If you earn whole of your life, and if you don't do anything which is probably making the property goes into the right hands, you are probably at a wrong platform. Simple thing, but very difficult, very uncomfortable. So today, my role is to make all of the people who have joined Pan India that what is the importance of the will, who can do it, why it should be done, and how it will be done. So first of the thing is who can do the will. Anybody who is of a sane mind and adult can do a will, and anybody who holds a property will do a will. Because if you don't have a property, or whatever will you are doing, it will have no effect, because there is no property to be monitored or to be administered. So creating a will for the properties which you have already earned or you have inherited. Creating a will for the benefit of your near and dear ones is the most safe and most the needed thing in the hour of this corona scare. Today, yesterday only, we had a call from quarantine center. One of my clients is being quarantined in Ahmedabad, and he called up straight away because his phone is working that I want to do a will, and on an urgent basis. So, people are so scary nowadays because of these uncertain times. It is the most
required thing to do, like, first most required thing to do is to take care of your health. Second is to get yourself insured upfront. And third is creating a will. Because under Indian Succession Act, properties can be transferred after your demise in two ways. The first thing is according to your wish. Second, according to the law. If you have a clear-cut idea about who will get which property, you should always create your will. And how to create a will, I'll definitely elaborate it in a few moments. If you don't do a will, the property creates a lot of frustration amongst the recipients, because who will get what, it is not determined, it is not in metes and bounds, and it all goes into an hodgepodge. Then a lot of litigations all throughout. If Sanjay Gandhi could have done a will, Indira Gandhi and Maneka Gandhi would be living together. But because Sanjay Gandhi died untimely and he has no will, the litigation has become, a kind of a benchmark in Indian judiciary. Because Prime Minister of India is fighting with her daughter-in-law for the estate of his son who died by an accident. So everybody who is adult, who is of sound mind, and who is capable of understanding the situation and understanding his assets and liability should always create a will. After probably, in generality, I would prefer anybody who is above 50 should do upfront his will. And it is not very expensive. It is not very, very complex, but it is uncomfortable. And you have to come out of your comfort zone and think of the properties which you are going to inherit to your near and dear ones. And if they get it without any litigation, clear transfer would be very easy and there will be no fuss. Otherwise, our future generation will say that पापा जी एसेट नहीं छोड़ के गए, लेकिन हमारे लिए लायबिलिटी छोड़ के गए. So my earnest request is all of you who are understanding this particular topic should go for a will. And how to go for a will, that is probably very, very simple thing. What are requires, what are the ingredients which we have to add, and how will is effective and how will can be frustrated, that we'll also discuss. अच्छा, मेरा chat box में one of the friend has clearly said that sir हिंदी में शुरू कीजिए. Honestly speaking, मैं इतना हिंदी में comfortable नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अभी आगे का जो सेशन है मैं हिंदी में ट्राई करूंगा. अगर हिंदी ग्रामर में कोई डिफिकल्ट हो तो प्लीज bear with me. So you have to first list out all your properties. The properties part is consisting of three major categories. The first is movables, second is immovables, and third is intangible. So first we discuss the movable properties. Movable properties including all your cash on hand, all your bank accounts, all your shares, all your mutual funds, all your FDRs, all your deposit with any firm in which you are a partner, any company where you hold the shares, your insurance policies, PPF account, your ज्वेलरी जो भी आपके पास है, और इसके अलावा इसके जो भी आपके पास फर्नीचर फिक्चर्स वगैरह है. Mostly people don't take a very serious look while writing a will, and in generality वो लिख के दे देते हैं. और फिर ये जैसे कि गोल्डन ऑर्नामेंट्स है तो उसकी वैल्यू नहीं लिखते, उसकी डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं लिखते, इसका वेट नहीं लिखते, इसमें डायमंड स्टडेड है तो उसका डायमंड स्टडेड है ऐसा नहीं लिखते. और रेसिपिएंट के लिए टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू थी एक बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटस खड़ा होता है. And to prove it, they will have to go post to post, and a lot of litigation is invited. So while creating a will, all listing out of all your properties is very, very important, because without the details, you will not be, आपको पता नहीं चलेगा कि ये will में सब कुछ आ गया कि नहीं आया. Will drafting से पहले सबसे पहले आप अपनी जो भी movables है उसका एक लिस्ट कीजिए. जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी है तो कौन सी कंपनी में है, पॉलिसी नंबर क्या है, इसका एजेंट कौन है, इसका डेवलपमेंट ऑफिसर कौन है, किसको कनेक्ट करना है,
ये सब चीज जो है आपको इम्पोर्टेंट है विल की डिटेल्स में डालने के लिए, ताकि आपके बाद जो भी आपके नियर डियर है वो सबको पता चले कि व्हाट यू आर लिविंग आफ्टर योर डेथ। तो मूवेबल्स में ये सब चीज रहेगा, और इसमें आप इतना ऐड क्लोज कर सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ माय डेथ जो भी बाकी रहा, जो भी रेसिड्यू है, दैट विल गो टू दिस जेंटलमैन और दिस वुमन। तो मूवेबल्स में ये सब कवर करना बहुत जरूरी है। इसके बाद इमूवेबल प्रॉपर्टी में आपके पास अगर एग्रीकल्चर लैंड है, एनए प्लॉट है, आपका रेसिडेंशियल फ्लैट है, रेसिडेंशियल ब्लॉक है, आपके पास कोई शॉप है, इवन आपके पास कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, इसका क्लियर डिस्क्रिप्शन देना चाहिए। इसके साथ इसकी बाउंड्रीज देना चाहिए, कौन से सेल डीड से आपने वो परचेज किया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके हिसाब से ही टाइटल पास हो रहा है जो भी आपके बाद में जिसको मिलने वाले हैं। तो ये सभी चीज इम्पोर्टेंट पहले कलेक्ट करके रखिए, फिर इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह बिल्कुल क्लियरिटी से ले लीजिए। अगर इसमें कोई लिटिगेशन है तो लिटिगेशन का भी उसमें मेंशन कीजिए। अगर आपके पास पोजेशन नहीं है तो वो भी लिखिए। इफ यू हैव गिवन इट ऑन रेंट टू समबडी, तो वो भी लिखना बहुत जरूरी है। और आपके पास अगर कोई रेंटेड प्रॉपर्टी है तो वो रेंटेड प्रॉपर्टी के जो राइट्स है आपके, वो भी आप इनहेरिट कर सकते हैं। एंड देयर आर इननंबरेबल जजमेंट्स ऑफ हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट that these rights are going to the next generation, provided it is not a commercial property. अगर commercial property है तो जो occupant है उसको ही right मिलता है। अगर residential property आपके पास कोई rented property है residential, तो उसमें जो भी occupy कर रहा है उसके साथ बाकी के legal heirs को भी right मिल रहा है। ऐसे some judgments आते हैं, but it is always a liquid thing and it always changes. तो ये दो immovable और movable property का description हमने आपको दिया। इसके अलावा in today's time there is a wonderful concept in US and UK that you can inherit your social media accounts. तो आपका जो भी Facebook अकाउंट है, आपका जो LinkedIn अकाउंट है, जिसके ऊपर अगर बहुत अच्छा काम हुआ है, तो there are all chances that you may be also getting some income from that. तो वो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, वो सोशल मीडिया अकाउंट आप यूट्यूब चैनल है, आपने जो भी जनरेट किया है, इवन IPR राइट्स है, even you are a writer and you have written a book, तो उसकी रॉयल्टी इनकम है। ये सब चीज जो कि आप किसी को देना चाह रहे हैं उसका एक लिस्ट आउट करना बहुत जरूरी है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट नो दैट वी कैन इवन क्रिएट अ विल फॉर द सोशल मीडिया अकाउंट एंड ऑनलाइन कंटेंट। So this is probably in today's era, now changing era. Before 5-10 years, if you would have discussed this, even books have not mentioned this, that these IPR rights and social media rights are also inheritable. But now you can give your username and password to the recipient, and you can be alive eternally through your social media accounts. तो this is बहुत जरूरी है आज के दिन में ये सोचना कि मैं जिंदा रहने के बाद, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी अगर रहना चाहूंगा, तो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट, मेरे सो एंड सो सन या डॉटर विल कंटिन्यू द लेगेसी, और मैं थ्रू दिस आई विल बी अलाइव एटर्नली। नया सोच है, लेकिन बिल्कुल ये आज के दिन के लिए हम अगर चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। एंड आई विश के दोज पीपल हु हैव क्रिएटेड वंडरफुल कंटेंट ऑन सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो उनके लीगल हेयर्स को इनकम जनरेशन का भी एक इसमें से मौका मिल रहा है। तो ये बिल्कुल सोचना चाहिए। इसके बाद जो भी प्रॉपर्टीज है, इसमें देयर आर 3 पार्ट। ईच प्रॉपर्टी आइदर इट कैन बी अ सेल्फ एक्वायर्ड and self-earned. Second, it may be an ancestral one, and third may be co-owned. तो जो भी अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसका बिल्कुल हम विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट आस्किंग एनीबॉडीज कंसेंट, स्ट्रेट अवे हम विल कर सकते हैं। दोज प्रॉपर्टीज हु आर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज, इसमें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में अनडिवाइडेड अपना शेयर रहता है। तो जो भी अनडिवाइडेड शेयर है, इफ इट इज नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड विद इन द लीगल हेयर्स, जैसे कि एग्रीकल्चर लैंड में 3, 4, 5 भाइयों का नाम है, और जो भी टोटल एग्रीकल्चर लैंड है वो मिड्स एंड बाउंड्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, तो अनडिवाइडेड शेयर उसका आप बिल्कुल विल कर सकते हैं, और वो अनडिवाइडेड शेयर विल गो टू योर लीगल हेयर। इन टर्न दे विल बिकम को-ओनर इन द प्रॉपर्टी ऑलरेडी एंसेस्ट्रल।
And third one is if you have purchased some property where you have undivided share, जैसे फ्रेंड्स के साथ प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, बिजनेस एसोसिएट्स के साथ प्रॉपर्टी परचेस करते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी में जो भी आपका अनडिवाइडेड शेयर है उसका आपको बिल कर लेना चाहिए, क्योंकि आज आपका जो भी रिलेशन है आपके फ्रेंड्स के साथ या आपके बिजनेस एसोसिएट के साथ, उसमें इफ यू आर नॉट देयर तो उसी ट्रीटमेंट से आपके लीगल हेयर्स को अनहिंडर्ड लीगल लीगेसी मिल जाए, इसके लिए ये करना बहुत जरूरी है। तो तीन तरह की प्रॉपर्टी और तीन तरह का इसका स्टेटस वो आपको पहले से ही लिस्ट आउट करना चाहिए, और यू हैव टू क्लियरली मेंशन दैट आई हैव 25% अनडिवाइडेड शेयर और आई हैव 1% अनडिवाइडेड शेयर काइंड ऑफ है, so that there is no confusion for the legal heirs. You have to also list out the legal heirs of the beneficiaries to whom you want to pass the property. ऐसे होता है बहुत केसेस में हमने देखा है कि डॉक्टर्स को लीगल विल में वो कहते हैं कि हम ये इतना देना चाह रहे हैं, एंड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द विल he will pass on that particular property to the daughter. If the daughter says that, daughter says मुझे नहीं चाहिए and let it go to my brother or my mother or whatever, तो एक डिफरेंट लीगल रूट रहता है। लेकिन अगर जो भी आपका लीगल हेयर से इसमें किसी को भी आप लिस्ट में एलिमिनेट करेंगे तो इसकी वजह से कंफ्यूजन होना जरूरी है, बिकॉज आफ्टर योर डेथ ऑल लीगल हेयर्स विल हैव इक्वल शेयर इन योर प्रॉपर्टीज। तो आप जिसको देना चाह रहे हैं उसका नाम लिखिए, जिसको नहीं देना चाह रहे हैं उसका नाम भी लिखिए, और क्यों नहीं देना चाह रहे हैं उसका एपिसोड भी क्लियरली लिखिए। जैसे कि लड़की को शादी के टाइम पे हमने सब कुछ दे दिया है एंड नाउ आई डोंट वांट एनी फर्दर एसेट टू बी ट्रांसफर्ड, तो वो भी आपको क्लियरली लिखना चाहिए। या मेरा सन है वो मेरे से अलग है, उसको उसके टाइम पे मैंने मेरे कैपेसिटी से जो भी देना था वो दे दिया है, एंड नाउ ही इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ मी, और व्हाटएवर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ योर सोशल नेचर, वो आपको विल में क्लियरली आइडेंटिफाई करके एपिसोड के साथ लिखाना चाहिए। अगर वो आप नहीं लिखेंगे और एम्बिग्विटी रहेगी तो दैट legal hair, boy or girl, will always have a chance to challenge this will, that you have done this will in not your clear status of mind, and इसके बाद जो recipient है उनको बहुत litigation झेलना पड़ता है। तो this is probably the care which we need to take while listing out the legal heirs। और ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है कि आपको legal heirs को ही property देना है। There are n number of cases where I have drafted a will that the gentleman or the lady was huge properties and they feel like their kids are very capable, उनको मैं कुछ नहीं देना चाह रहा हूँ, and entire thing goes to a charitable institution or a school or for some activity, or even in one case I am being appointed as the executor of the will, and this entire amount which is being kept in a bank FD in my name, and this FD interest is every year is being used in the school books of the municipal schools। तो ये बिल्कुल कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपकी जो भी प्रॉपर्टी है आप अपने लीगल हेयर्स को ही दे, आप अपने कजिन्स को भी दे सकते हैं, आप फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं, इवन लॉयर्स को भी दे सकते हैं, इन एनी वेज। So that is what probably how you can list out the legal heirs, and उसको कौन लीगल हेयर को क्या आप देना चाह रहे हैं वो भी आपको लिस्ट आउट करके लिख लेना चाहिए। You also need to write any charities you want to do out of your estate, because वो दिल की बात दिल में रह गई और हम ऊपर चले गए, ऐसा ना हो कि जो भी आपकी खुद की स्कूल है या the place of worship where you go, where you feel like worth doing charity out of your hard earned properties, तो बिल्कुल वो आप लिख सकते हैं, और the legal heirs are bound to follow for these charities। इसके बाद you will have to decide if you want to appoint an executor or not। It is not compulsory, it is not mandatory, but to make the things easier for the legal heirs, आप एक executor appoint कर सकते हैं जो कि आपके confidence का है, और whom you feel like he can be an honest man, and your all properties in his hands will be in safe hands, and वो जो भी distribute करेंगे वो आपकी will के हिसाब से करेंगे।
तो किसी भी पर्सन ऑफ कॉन्फिडेंस को आप अपॉइंट कर सकते हैं अपने एग्जीक्यूटर की तरह. नॉर्मली पीपल अपॉइंट क्लोज relation professional like a lawyer or a chartered accountant. If you have heard the news of Birla family, they have appointed one chartered accountant, Mr. Loda, who was in charge of 4,000 crore worth of properties, and he didn't act according to the allegations in the Kolkata High Court. He didn't act according to the wish of the person who was deceased, and litigations are on up to Supreme Court. So it is very important to choose a person of high integrity, honesty, and of high net worth person, so that he may not be becoming a greedy of grabbing your property and using your family members for your property. तो इस तरह से अच्छे पर्सन को ढूंढना और उसको एग्जीक्यूटर बनाना ये बहुत जरूरी है. और उसके साथ एग्जीक्यूटर का भी एक कंसेंट एफिडेविट साथ में लगाना चाहिए. दैट इज नॉट मैंडेटरी, लेकिन इसके हिसाब से वो पर्सन जो है वो आपने उनको एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया है और ही इज रेडी फॉर द ड्यूटीज, वो भी बहुत जरूरी है. तो आज के टाइम में इमरजेंसी जो भी क्रिएट हो गई है पूरी दुनिया में, इसमें अच्छे आदमी को एग्जीक्यूटर अपॉइंट करना और उसको भी इन्फॉर्म करना, इनसे कंसेंट लेना, वो विल कराने के लिए एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट हो गया. ऐसा बहुत बार देखा गया हुआ है कि एग्जीक्यूटर जो है वो सेम एज का वो पसंद करते हैं. जैसे पर्सन हु इज डूइंग विल is 70 years of age and he is appointing one person who is also 70 or 70 around here because of the same age. The risk of executor going abroad वो पहले हो गया और will जो है वो फिर बाद में ओपन हुआ तो पता चला कि एग्जीक्यूटर है ही नहीं, तो और तकलीफ शुरू हो रही है. तो इन जनरल वी एडवाइज ऑल द पीपल कि आप जो भी विल करना चाह रहे हैं इसमें ऐसे इनकॉन्फिडेंट पर्सन को ढूंढिए जो एग्जीक्यूटर बनना के लिए कंसेंट दे रहा है, जो आपकी एज से मिनिमम 10 साल कम एज का हो, ताकि आपके जाने के बाद ही प्रोबेबिलिटी इनका जिंदा होना है तो ही कैन एक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ योर लीगल हेयर्स कंफर्टेबली. और इसके बाद आपको 2 विटनेस चाहिए. If will is not having any witness, so that will not be treated as a legal will और उसकी enforceability 0 है. तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 2 इनकॉन्फिडेंट, जैसे एग्जीक्यूटर ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से विटनेस का भी ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये विटनेस जो है वो 2 विटनेस की ही आखिर में जरूरत पड़ेगी कि ये जो प्रॉपर्टी है आपने इनकी प्रेजेंस में विल किया है, यू आर इन बेस्ट मूड, यू आर इन मोस्ट फिजिकल फिट कंडीशन एंड मेंटल स्टेटस, वो विल किया है, वो कोर्ट के द्वारा ये 2 विटनेस की एफिडेविट पे ही माना जाएगा. तो ऑनेस्ट लोग जो है, अभी लोग ऐसे कैजुअली विटनेस को ढूंढ लेते हैं. हमारे पास एक ऐसा केस आया कि यहाँ पे एक बैंक ऑफिसर ने विल किया है और विल में इन्होंने अपने जो कलीग है उसका विटनेस करवाया. अभी वो उनका कलीग आज राजकोट में है, उस टाइम पे साइन करवा लिया. 3 साल के बाद उसका ट्रांसफर हो गया तिरुपति, फिर तिरुपति से वो चला गया झारखंड, फिर झारखंड से वो चला गया सिलीगुड़ी. अभी इनके लीगल हेयर्स इनको ढूंढते, वो रिटायर्ड भी हो गया और अभी कहाँ जाएगा पता नहीं. तो अपनी सोसाइटी में जो आपके आसपास में है, आपके नोन है, इनका रेगुलर कनेक्ट है, ऐसे आदमी को आप विटनेस की तरह रखना चाहें और वो विटनेस भी ऑनेस्ट होना चाहिए. इसके बाद कोई चीज एक्सपेक्ट न करे आपके लीगल हेयर से. इस तरह से फैमिली और इनका सोशल स्टेटस और नेटवर्क जो वो आपसे और आपसे ज्यादा है, तो ही विल नॉट बी एट रिस्क ऑफ डूइंग समथिंग डिसऑनेस्ट. वो प्रैक्टिकल थिंग है. लीगल वे में तो आप किसी को भी रख सकते हैं. एनीबॉडी, एनी वर्किंग पर्सन कैन आल्सो बिकम अ विल, बट दैट इज नॉट प्रोबेबली अ प्रैक्टिकल थिंग टू डू. तो ये 2 विटनेस उस तरह से होना चाहिए कि जो एक जो है अगर मेडिकल प्रोफेशन से है तो दैट विल बी बहुत इजी हो जाता है कि डॉक्टर है, अगर विटनेस देने के लिए राजी हो गए तो डॉक्टर ने विटनेस किया तो कोर्ट ऑलवेज बिलीव इट, यू आर इन बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड व्हेन द विल इज रिक्वायर्ड टू बी डन.
और आपकी एज से कम एज वाले को ही विटनेस बनाए, ये मेरी प्रार्थना है, क्योंकि हमारे अनसर्टेन टाइम्स में अगर ऐसी 80 year person is giving a witness to a 75-year person, the chance of the station comes early to the witness than the person who is further traveling. So इस तरह से it is very important for getting to very honest, close to your heart witnesses who are below of your age and probably of the same social status, net worth status, or above your net worth status. The will can be oral will also and written will also. ऐसे दो आदमी एक विटनेस दे कि ये आदमी ने मेरी प्रेजेंस में कहा था कि ये प्रॉपर्टी जो है वो एक्स और वाई को जाना है, तो वो दोनों का स्टेटमेंट कोर्ट में अगर प्रूव हो गया तो दैट प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड विद ओरल विल. ओरल विल इज नॉट सेफ, बहुत इसमें लिटिगेशन होना है एंड ये लिटिगेशन की वजह से बहुत प्रॉपर्टीज जो है वो अनऑक्यूपाइड और वर्दी प्रॉपर्टीज लिटिगेशन में पड़ी हुई है. सो आई वुड प्रिफर दैट वर्थ टेकिंग अ पेन टू डू अ रिटर्न विल. इसमें स्टैम्प पेपर की जरूरत नहीं रहती, बट मैं प्रिफर करूंगा पर्सनल वे पे कि आप स्टैम्प पेपर पे ही कीजिए, ताकि ये प्रूफ रहे कि आज ये दिन पे आपने विल किया हुआ है, ये विल का डेट ऑफ एग्जीक्यूशन वो मैचिंग हो रहा है स्टैम्प पेपर के साथ. वरना फेक विल होना और फेक विल क्लेम करना और फेक विल को प्रूव करना, इस तरह का सिचुएशन हो सकता है. तो एक 100 रुपीज मिनिमम स्टैम्प पेपर आप उसके ऊपर विल कीजिए. रिटन भी हो सकता है, टाइपोग्राफिकल भी हो सकता है. यू साइन ऑन एवरी पेज you have to sign, and also witness sign also required on every page, and if you can get it registered. अच्छा, रजिस्टर में भी कंपलसरी नहीं है, will cannot be made compulsorily registerable, but under 17 of registration act कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में वो नहीं है, बट सेक्शन 18 वो रजिस्टरेबल डॉक्यूमेंट में बिल्कुल है. तो रजिस्ट्रेशन करवाने से आपकी वहां पे वीडियो पे ओथ ली जाती है अभी नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो दैट इज अ परमानेंट एविडेंस दैट यू आर इन बेस्ट स्टेट ऑफ योर हेल्थ एंड बेस्ट स्टेट ऑफ योर माइंड. You went there personally and you have given oath that I have done this will, and there is no scope for any further litigation of challenging the authenticity of the will. और वहां पे भी दो विटनेस को आपके साथ आना होता है, वो विटनेस का भी फोटोग्राफी होता है, उसका भी वीडियोग्राफी होता है, और ये सभी प्रोसीजर के हिसाब से विल की ऑथेंटिसिटी जो है बहुत इजी हो जाती है, और उसको प्रूव करने के लिए आपको बाद में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं रहती. नोटराइज विल भी हो सकता है, लेकिन नोटरी का भी एज आपकी एज से बहुत कम होना चाहिए, वरना नोटरी पहले ऊपर चला गया तो फिर बाद में ये विल की नोटराइज्ड वैल्यू जो है वो कम हो जाती है. बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट और मोर सेफ टू गेट द विल रजिस्टर्ड विद द सब रजिस्ट्रार, एंड सब रजिस्ट्रार आर बाउंड टू कीप इट सीक्रेट. वो किसी को इसकी कॉपी नहीं दे सकते, वो अपने पास सेफ कस्टडी में रखते हैं, एंड लीगल हेयर्स एज एंड व्हेन द डेथ अकर्स they go and get this copy of the will from the sub registrar. तो गवर्नमेंट ने बहुत सेफ सिस्टम किया हुआ है, तो I certainly feel like you should all take the benefit of that. Now the registration procedure, as I have told you, you get it prepared in on a stamp paper, और इसमें आपके फोटो लगेंगे, आपके थंब इंप्रेशन होगी, आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेगा, दो विटनेस का भी केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेगा, उनका भी साइन रहेगा, आपका पर पेज साइन करना पड़ेगा, और ये सब करके आप सब रजिस्ट्रार में जाइएगा तो सब रजिस्ट्रार कैन गेट इट रजिस्टर्ड, एंड नॉट ए वेरी कॉस्टली अफेयर. वहां पे 200, 300, 400 रुपया एज पर द स्टेट वो खर्चा होता है, लेकिन इट इज द सेफेस्ट मोड ऑफ क्रिएटिंग ए विल फॉर valuable asset which you are going to giving to your family. Now बहुत important and practical thing is आप जो will कर रहे हैं इसमें अपनी वाइफ या अगर लेडी will कर रही है तो अपने हस्बैंड को क्या दे रहे हैं, देना चाह रहे हैं, या इनको क्या पास ऑन कर रहे हैं. मोस्ट ऑफ द केसेस अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस ऑफ 35 years I understand, I advise the husband to give all the properties first to the wife, or wife to the first in first case to the husband,
and after the death of the husband or wife, they will have a right to create their will that this property goes to this and this legal heir. Because in the changing times, in the myopic way of living the things and me first society, I have come across many cases where the husband and wife, in rush of blood, give the property to the legal heir straight, and the surviving spouse will have a lot of worries, lot of tensions, and a lot of begging. Also, I have seen after the property goes to the son or daughter, they are not, the husband and surviving husband and wife are not maintained properly, and a very serious social economic problem. So to avoid this situation, the property should first go to the surviving spouse. इनका एक राइट दे दीजिए आप, और वो उसमें ये भी लिख सकते हैं कि अगर मेरी हयाती में अगर मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड नहीं रहे तो प्रॉपर्टीज जो है वो मेरे सन या डॉटर को इस तरह से जाएगी। वो एक बीच में एक स्पीड ब्रेकर आप डालिए, ताकि आपके न होने के बाद आपके वाइफ को या आपके हस्बैंड को कोई मजबूरी न रखनी पड़े अपने मेंटेनेंस या सर्वाइवल के लिए। अगर प्रॉपर्टी साथ में रहेगी तो ऑब्वियसली यू विल बी ट्रीटेड नाइसली। ऐसे एक जनरल पर से सोसाइटी में हम देख रहे हैं। एंड ये जो विल है, इसमें अगर द प्रॉपर्टी सिचुएटेड विद इन 4 मेट्रोपोलिस सिटीज, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एंड दिल्ली, तो इसमें हेयरशिप सर्टिफिकेट इज अ मस्ट। इसके अलावा किसी भी प्लेस में हेयरशिप सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड for the benefit of the property getting transferred in proper way. Most of the clients are willing that this will should be probated, और कोर्ट से उसका प्रोबेट सर्टिफिकेट लेने से उसका सर्टिफिकेशन जो है वो फाइनल हो जाता है। इसमें फिर बाद में कोई चैलेंज नहीं रहता, बिकॉज कोर्ट गिव ड्यू पेपर नोटिस एंड आल्सो प्रोक्लेम दैट दिस जेंटलमैन हैज क्लेम्ड द प्रोबेट ऑफ द विल डन बाय मिस्टर सो एंड सो, and anybody has any right, title or interest in the property, तो वो claim कर सकते हैं, and that can be counter pated too. And if the claim is wrong, court will give a verdict in favor of the person who is getting the property back. तो ये will के लिए इतना important ingredients और कैसे उसको create किया जाता है वो मैंने explain किया। will हो गया वो final तभी है जबकि आप ना रहें। अगर आपकी विद इन योर लाइफ टाइम यू फील लाइक विल हमने 10 साल पहले किया था, फैमिली सिचुएशन इज चेंज या सर्कमस्टेंसेस चेंज या प्रॉपर्टी स्टेटस चेंज, तो यू कैन ऑलवेज हैव अ राइट, एवरी राइट टू चेंज द विल, और यू डू अ सप्लीमेंट्री विल दैट इज कॉल्ड इन लीगल टर्म्स अ कोडिसिल। तो वो भी आप कर सकते हैं, उसको भी रजिस्टर कर सकते हैं। बट आप जो फर्दर विल करें, इसमें पुराने विल को आप कैंसिल करना चाह रहे हैं और कैंसिल कर रहे हैं, ऐसा लिखना बहुत जरूरी है। और वो भी लिख सकते हैं कि इसमें इतना मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो इतने लिए ही हमने ये फर्दर विल किया हुआ है। तो दिस इज प्रोबेबली मेकिंग द थिंग्स इजी इन द हैंड्स ऑफ द लीगल हेयर्स। एंड इतना जो भी आज विल के बारे में मैं कहना चाह रहा था, इसमें एक बहुत अच्छी सी, जैसे पराग भाई हैज ऑलरेडी टोल्ड फॉर माय हॉबीज, I would like to, share a couplet from a wonderful movie called Guru, who is for the, life of Dhirubhai Ambani. The couplet goes like this: जागे हैं देर तक, कुछ देर तो सोने दो, थोड़ी सी रात और है, सुबह तो होने दो, आधे अधूरे ख्वाब जो पूरे न हो सके, एक बार फिर से नींद में वो ख्वाब बोने दो। तो हम जो भी प्रॉपर्टी है वो अपने ख्वाब में ही ना रखें, उसको पेपर पे लेके आए, और जो भी लीगल हेयर्स या जहाँ पे भी आप उसको देना चाहें वो पास ऑन कीजिए, और इसकी वजह से बहुत बहुत कंफर्ट आप फील करेंगे। और इसके बारे में और कोई भी क्वेश्चंस है तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक इट अप। I get a question from Mr. Kamal Kumar. He says that he is having only one child. Should I make a will? बिल्कुल सर, ये लीगल वे पे आप अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहेंगे तो आपके ऊपर ये जिम्मा है कि आपका एक ही चाइल्ड है।
आपके जाने के बाद किसी और पर्सन आके आपका लीगल हेयर बनना चाहे, तो उस टाइम पे आपके जो सिंगल चाइल्ड है उसको ये विल जो है दैट बिकम्स फाइनल अथॉरिटी। यू हैव मैरिड ओनली वंस, you have only one child and the child name is so and so, and except that you have no other legal heirs, so that will help you in passing the property to your child. There is another question: is the executor passes away before me, what will be the consequences? आप सर जो जिनको executor बनाया है उनका नाम replace करके एक नया will बनाइए और उसमें पुराने will का mention कीजिए कि इनको मैंने executor बनाया था लेकिन वो चल बसे हैं, तो नए ये एग्जीक्यूटर रहेंगे एंड दैट विल बी फाइनल। सबके इफ एवरीथिंग इज इन जॉइंट नेम विद दिस स्पाउस, विल इज एडवाइजेबल। यस बिल्कुल, क्योंकि जॉइंट नेम का मतलब ये हो गया कि आपका इसमें 50% अनडिवाइडेड शेयर है। अब 50% का जो आपका शेयर है वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर आपकी वाइफ को नहीं होगा, इसमें आपके जो भी चिल्ड्रन है उसका अनडिवाइडेड शेयर हो जाएगा। तो 50% जो भी आप शेयर कर रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, तो वो 50% शेयर के लिए आपको विल करना पड़ेगा कि वो 50% शेयर आप किसको देना चाह रहे हैं। तो दैट इज व्हाई द विल इज रिक्वायर्ड। नो, कमल कुमार जी, आप अगर जॉइंट नेम से प्रॉपर्टी रख रहे हैं तो जॉइंट विल करने की जरूरत नहीं है। यू हैव अ राइट टू ओनली अनडिवाइडेड शेयर ऑफ दैट जॉइंट ओन प्रॉपर्टी। आप अपना अनडिवाइडेड शेयर के लिए ही विल कर सकते हैं और आप जिसको देना चाहते हैं उसको दे सकते हैं। या संजय जी, मैं मेरा ईमेल आईडी एंड माय एड्रेस इसमें शेयर करूंगा, या आप हमारी एक्साइटेड सीईओ है आरएमए की फोरम चंदाराना, इनको आप कनेक्ट कीजिए, या फोरम प्लीज शेयर माय ईमेल आईडी ऑन द टेक्स्ट बुक। You mentioned about one certificate, this property situated in 4 metros. Please repeat. Yeah, okay. कार्तिक जी, ऐसा है कि RCIP certificate for any property is required in 4 metro cities. Except the metro cities, these RCIP certificate from the court by paying the huge amount of stamp duty is not required. ये LIC जैसा है, गवर्नमेंट ने एक स्लोगन बनाया ना कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, तो आप जिंदगी तक कमाए, टैक्स भरे और प्रॉपर्टी क्रिएट किया। आप नहीं रहेंगे तभी वो प्रॉपर्टी आपके जो भी नियर एंड डियर है उसको आप देना चाह रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट विल आस्क फॉर द स्टैम्प ड्यूटी टू इश्यू a हेयरशिप सर्टिफिकेट। In Gujarat, it is a maximum is 75,000 rupees, not a small amount. Plus, there are a lot of expenses other. Lawyers' fees also included. Then public notice in a prominent newspaper is also at your cost. You need to have a valuation certificate from an authorized valuer, who will also, there are a lot of valuer friends who may be smiling on this chat group. तो इनके भी इसमें गवर्नमेंट ने प्रोविजन किए हैं कि अगर आप नहीं रहे तो वैल्यूअर को भी कुछ मिलना चाहिए, लॉयर को भी कुछ मिलना चाहिए, और गवर्नमेंट तो सबसे पहले लेगी ही लेगी। तो 4 मेट्रो में ये इम्पोर्टेंट है, 4 मेट्रो के अलावा कंपलसरी नहीं है। Yeah, Mr. Atul Mohan is asking a question that can husband provide that all properties go to my wife, but if she dies with me or passes away within 30 days of my death, then the property will go to my son. Yeah, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपका जो भी विश है आप कर सकते हैं। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट 3 है इसमें। एक तो आपकी प्रॉपर्टी की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, सेकंड आपकी जो भी विश है वो, और तीसरा आपका कंप्लीट सेट ऑफ फैमिली मेंबर्स जो एज पर द लॉ आपका लीगल हेयर्स की डेफिनेशन में आ रहे हैं। उनको देना जरूरी नहीं है, बट उसका मेंशन करना जरूरी नहीं है, और क्यों उनको नहीं दे रहे हैं वो भी लिखना जरूरी है। Dr. Dharmesh Rawal is asking, there are nominee in mutual fund investment, can this be final nomination? What if the will nomination of the mutual fund is different? लुक डॉक्टर धर्मेश, इस तरह से है कि आप नॉमिनेशन कर रहे हैं वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर के लिए कर रहे हैं। नॉमिनीज आर नॉट द लीगल हेयर्स। नॉमिनी कैन बी एनी पर्सन, इसमें ऐसे कंपलसरी नहीं होता। बट इफ यू हैव अ डिफरेंट विश, तो
तो वो आप विल में कर सकते हैं। और लीगल हेयर का नाम पे अगर म्यूचुअल फंड या शेयर्स में या बैंक में आपने नॉमिनेशन करवाया और विल में आप लिख रहे हैं कि इनके नाम से नॉमिनेशन किया मैंने, और नॉमिनी का ये फर्ज है कि ये प्रॉपर्टी विल गो इनटू कॉमन हॉच पॉच और सभी ब्रदर सिस्टर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट यू कैन डू बाय विल. By nomination, it will go to the hands of only nominee as a just a nominee person. He doesn't become an owner of the property. It is only for the sake of transferring the smoothless transfer of your financial assets, and that can always go to the hodgepodge, and you have a right to create a will. Yeah, इसमें दो executor भी रख सकते हैं, but both should be in synergy. And if the synergy is not there, if they are fighting with each other or conflict of interest is there, the problems would be much larger than we expect right now. Atul Mohanji, unregistered will, does it make any difference in the post-death devaluation of property on my hair vis-a-vis registered will? Sir, मैंने बहुत clearly कहा आपको कि अगर registered will करते हैं तो that is the safest mode. Unregistered will भी legal है, उसको भी establish कर सकते हैं, but it is little bit scary. And unregistered will को prove करना in the eye of law is a little bit difficult and what I say, costly, so far as the lawyers' fees are concerned. Yeah, is probate necessary in Rajkot? Yeah, Abdali ji, इसमें ये है कि Rajkot is such a place, unique place in entire Gujarat in many ways. तो राजकोट की जो भी properties है, तो जो buyers need, buyer says that I want the probate and then only I will accept the property for the purchase. It is obviously required. Under the law, it is not compulsory. If the property is being transferred in government records, in city survey, municipality, PGVCL, all places, your person who is getting the property वो transfer हो गया, तो compulsory नहीं है. But it is essential in Rajkot property market. So while selling the property, you always account for this cost and get a probate from your known lawyer, and then you put the property in the market. Otherwise, your property will be treated as not a title clear in common parlance. Though it is not title, there is no problem in title. And I have issued n number of title reports of properties which is being transferred only through will. And banks have also accepted it. But the buyers are very scary in Rajkot. So the probate is they are asking for. On a deathbed or in otherwise, someone uses WhatsApp voice message and send the audio note to the lawyer and near and dear. Will this be legally valid? Yeah, absolutely, Parag bhai. But the onus on always the person who is claiming that this property is now being inherited by a WhatsApp message. In fact, the Supreme Court has recently accepted the WhatsApp blue tick as a proof of service, and the telephone which the person has used shows a blue tick on the WhatsApp voice message. I think the purpose is fully served, but very difficult to establish in the court of law. And this is a very hypothetical thing which you are probably, as my friend, I understand that you are just want my knowledge to be sharpened, and I'm very thankful to you for this. If we on my death property has passed to my wife, then if I provide that if she dies within 30 days, it goes to my son. Is it essential that it is backed by her will? Yeah, the moment she becomes owner through your will, it is very essential that she should do a will herself, and whatever her wish is there, that is to be written with 2 witnesses. If it is not being written, obviously it is opens a Pandora's box in the hands of the recipients, and there will be chance of litigation. A person is a trustee of a trust and property is in the name of trust person is also recorded in the revenue record. What about the right of a person over the property and how to effect it to will? There is no right on property where the trust is involved, because you hold a post for a temporary period during your lifetime, and you cannot do any will for third party's property. Trust is a third party, और इनकी प्रॉपर्टी पे आपका कोई राइट कभी क्रिएट नहीं हो रहा है. यू आर ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटर. तो ट्रस्टी जो आप कोई भी संस्था में है, उसकी प्रॉपर्टी ट्रस्ट की है, आपकी नहीं है, तो इसमें आपको कोई राइट नहीं मिल रहा है विल करने के लिए.
At present, my home is in my name. If I want to transfer in my wife's name, has she pay 6% stamp duty? No, but right now, why you want to transfer? You don't need to transfer it in your wife's name. Unnecessarily payment of stamp duty and registration fee and other complications. Why you want to invite? You just create a will in your wife's name that in case of your absence, the property will go to your wife with 2 witnesses of your known group, and keep this will duly registered. Property will be transferred through the will as and when you are absent. There is शैलेश जानी जी पूछ रहे हैं कि पर्सन इज ए ट्रस्टी ऑफ ए ट्रस्ट, तो मैंने उसका जवाब दे दिया कि ट्रस्ट जो है वो इंडिपेंडेंट एंटिटी है, इसमें कोई राइट क्रिएट नहीं होता इंडिविजुअल का, और ट्रस्ट इज एटर्नल एंटिटी अनलेस एंड अनटिल इट इज बीइंग बाउंड अप, तो प्रॉपर्टी भी एटर्नली रहेगी ट्रस्ट के नाम पे ही. In UP, probably Atul Mohanji, I am not very sure about it. ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन में इन पर्सन जाना अभी तक तो प्रोसीजर है, और अगर यूपी में इस तरह से हो गया है तो यू कैन चेक अप विद सम नॉन लॉयर इन यूपी. या कमल कुमार जी, प्रोबेट यह है कि अगर आपने विल किया और ये विल का ऑथेंटिसिटी चैलेंज हो गया तो यू कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ, और उसका कोर्ट से आप एक प्रोबेट सर्टिफिकेट ऑन एप्रोप्रिएट स्टैम्प ड्यूटी निकाल सकते हैं. यू अप्लाई अलोंगसाइड अ कॉपी ऑफ विल एंड कोर्ट विल एग्जामिन द विल. They will call up the recipients, they will call up the witness, and their oath will be taken before the court, and they also publish a notice in local newspaper that you have applied for the authenticity of the will through which you are getting a property. और उसके बाद कोर्ट विल इश्यू अ प्रोबेट सर्टिफिकेट व्हिच इज एनेक्स्ड विद द विल, तो ओरिजिनल विल के साथ लग जाता है, और कोर्ट विल सर्टिफाई दैट दिस विल इज फाउंड ऑथेंटिकेटेड on an appropriate stamp duty, and the recipients are having a legal right through this will duly probated property transfer. If wife is required to do a will, and if I provide that if she dies within 30 days, then it goes to my son, becomes ineffective. तुलजी, इसमें यह है कि आपकी वाइफ जो भी विल करेगी वो आपके सन या आपके जो भी फैमिली है उसको बाइंडिंग रहेगा. ये प्रोबेबली एक ही चीज है. वन ऑफ माय क्लाइंट, बिफोर आई एम वेरी सरप्राइज टू हियर दैट, 10 साल से पहले एक आदमी मेरे पास आया था, मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग विल बनाना है, बहुत स्ट्रॉन्ग, इतना कंडीशन उसमें डालना है. 3 दफे ड्राफ्ट हमने रिवाइव किए, 3 दफे उसको चेंज किया, और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग. फिर मैंने उनको बताया कि इतना स्ट्रॉन्ग विल आप क्यों कर रहे, इतना एक्सपेंस क्यों कर रहे, कि एवरी ड्राफ्ट आई शूट टू यू, इट इज चार्जेबल बेसिस, आप इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं. मेरी लाइफ में इन्होंने सबने मेरे को हर तरह टेकन फॉर ग्रांटेड लिया है. ये मेरा लास्ट चांस है कि मैं उसको जितना भी कंडीशन डालूं वो सब उसको फॉलो करना पड़े. तो जो आप जो भी लिखेंगे आपके लीगल हेयर्स, दे कैन नॉट डिनाई इट. इनको ये फॉलो करना है इफ दे वांट टू गेट द बेनिफिट ऑफ योर प्रॉपर्टीज. तो इसमें जो भी आप अतुल मोहन जी, आपकी वाइफ जो भी कंडीशन डालेंगे वो आपके सन के लिए या आपके फैमिली के लिए बाउंड रहेगी. How can shares and other things be transferred by administrator of HUF? Administrator of HUF जैसा कोई कंसेप्ट नहीं है, HUF में करता रहते हैं, और वो HUF का अगर प्रॉपर्टी है तो that will, as I told you, like it is a property of HUF eternally. और जैसे ट्रस्ट में जो कोई प्रॉपर्टी है वो eternally है, आपका HUF में अनडिवाइडेड शेयर है, उसमें आप आपका विल कर सकते हैं in your share of your undivided HUF. HUF का पूरा आप विल नहीं कर सकते कभी भी. HUF is an eternal, it never dies, it never born, it never dies, it remains eternally, like as Osho said, I never born, I never died, I remained on this planet Earth for so and so period. तो HUF का भी उस तरह से ही है. एंड शेयर्स जो है HUF के नाम पे, तो वो it will, the कर्ता's name will be changed on the demise of the कर्ता. वो आपको एक अलग प्रोसीजर करना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ, alongside certain affidavits and testimonials. तो वो करके फिर under the rule कर्ता's name will be changed, but the HUF name will remain the same as per the HUF being formatted. If you have one child, do we need to make a will? All things have to go to him is what we want.
is making will required. या बिल्कुल करना चाहिए हितेश जी, क्योंकि वो एक ही है बिल्कुल। आपका फीलिंग मैं समझ रहा हूँ, बट अगर आप फील नहीं करते हैं और आज के बाद 10 साल 20 साल 50 साल के बाद there is somebody who creates a forged document। आप कश्मीर गए थे, आपने शायद एक जेठालाल का स्टोरी था कि वो कश्मीर गया था, किसी कश्मीरी लड़की के साथ फोटो निकाला, and then she came to her home, his home, and says that I am married to जेठालाल। तो उस तरह से सिचुएशन आपके फैमिली में या आपकी लाइफ में ना हो, इस तरह से आपको विल में क्लियरली लिखना चाहिए, I have only one wife and only one daughter or one son, and all the properties I bequeath to him. Can I be allowed to discuss with Chetan by unmuting me? Tulji, you can get my number and we can come on call, because this is probably a general platform. Lot of participants are having their questions. Family trust over will is said to be more beneficial. Your views on this, please, sir. Yeah, Akashi, of late, the high net worth families, they are creating family trust. But again, the taxation part and the government treatment part is ambiguity, lot of ambiguity, and I am fighting a lot of cases on family trust, which is being bequeathed by the person who has done a will. तो स्ट्रेट अवे ट्रांसफर अगर करना है, फैमिली ट्रस्ट की जरूरत नहीं कहाँ पड़ती है, वेयर यू फाइंड somebody who is disabled or mentally challenged, वो ऐसा कोई भी आदमी को आप ये कुछ देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल फैमिली ट्रस्ट इज एडवाइजेबल on a real term. Otherwise, there are a lot of challenges on ambiguity in interpretation part by the income tax department, by the revenue department, and at the time of transferring of the property, there are a lot of things. अगर trust को ये property आपने जो भी दी है वो transfer करना चाहेंगे तो they say that you go to charity commissioner or get a permission. Charity commissioner says that this is not a registered trust, तो हम permission नहीं देंगे. अगर परमिशन दिए अगर आपने सेल ट्रांसफर कर दिया तो रेवेन्यू रिकॉर्ड पीपल विल नॉट म्यूटेट द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ द परचेजर. तो इस तरह से इट इज नॉट एडवाइजेबल अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस. अगर करना चाहे तो इसको बहुत डेलिकेटली करना पड़ेगा. या सन को आप एग्जीक्यूटर अगर अपॉइंट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं. वो एग्जीक्यूटर और रेसिपिएंट दोनों कैटेगरी में अगर फॉल हो रहा है then the drafting would be little bit difficult, and very important aspects to be seen before creating such type of a dual capacity will. Yeah, we have a firm in Ahmedabad. We are having our office on Corporate Road. And you can mail me, I'll share my address details and other things. This is probably not for professional promotion. This is probably all friends who want to, attend and understand the will in the most critical corona times, where the uncertainty is the name of the game. And today morning you are happy, healthy, and in the evening you are quarantined. So even in those, a lot of my clients are coming up with a proposal to create a will. I was a little bit surprised how much all of a sudden this will business is spurted up. And I understand the agony and the pain and the worries for all people who are having properties and which are not being administered after their death according to their wish. So it is the right time to go for the will. In fact, what I feel like we are probably having a good time, and I wish forum to take over. Thank you very much for your wonderful inputs, good questions, and I try to solve all your problems. Except that if anybody have any problem or any question, feel free pro bono for anybody who want to get guidance. That is probably the need of the hour, my little philanthropy on part of the big challenge, economic challenge everybody is facing. So cakothari@yahoo.com, very simple mail ID, cakothari, cakothari, cakothari@yahoo.com.
Anybody can mail me. I'll try to give reply according to the best of my knowledge. And thank you very much. Have a wonderful friendship day. And tomorrow have a great Raksha Bandhan. Get Rakhi's tied, and all you are being coached by that Rakhi. That is my good wishes. Thank you. Forum, please go ahead. Yeah, thank you so much, Chetan bhai. This was one of the most interactive sessions we had from all the online sessions we had till now. So a lot of questions. We had around 70 plus participants here and more than 20 participants over YouTube who were following you. So more than like 100 people have benefited from this session, and lot of questions, like all the interested people and really interested people have joined today, and they have real concerns and they will take it many takeaways from this session. So before we ask Paresh bhai for a formal vote of thanks, Parag bhai has something to say. So over to you, Parag bhai. Thank you, Forum. Thank you, Chetan bhai. Very nice and interactive session. Really, I enjoyed the question for you was particularly in this, very uncertain time. I just have one appeal to all my friends over here, all the participants over here to become member of Rajkot Management Association. We have a very, very reasonable fees for our life membership, that is for 15 years. And the investment is just around 10,000 rupees. You can like log into our website and become member in couple of minutes. So that's the ease we have created for you. And I can assure you on behalf of the association that whatever investment you are doing, the small investment, it is going to yield a lot of results, because so many programs which will be coming from RMA towards our life member free of cost in due course of time. So those who are not members, I would request them to become our member and help this association to become stronger and stronger. Thank you, Forum. Over to Paresh bhai, please. Thank you, Parag bhai. Yes, Paresh bhai, you can conclude the session with formal vote of thanks. Paresh bhai. Okay. Thank you, Forum. Yeah. Thank you all the participants in today's very interactive session with Chetan bhai. Chetan bhai has shared his vast experience in a very short time with all of us. And Chetan bhai, congratulations for answering the bombardment of questions on you in various type of questions from various angles were asked to you. And you answered it very in a very perfect way. Thank you, Chetan bhai, and thank you all the participants for attending today's session. And on behalf of Rajkot Management Association, thank you all. And we would like to inform you that we keep on organizing such type of webinars regularly, and request all of you to join us in the next webinar also. Thank you very much. Thank you, Paresh bhai. And obviously, like when we were sharing this information about this session, we had shared about our upcoming sessions as well. So stay tuned with us. Like you can mail us at info@rma.org.in. I will mention it in the chat box. And the upcoming sessions are, we are coming up with a wonderful quality management conference on 8th. And then we have impression, subject on impression by Dharti Rathod. And then we have demystifying the digital transformation by Viral Rawal, who is an international faculty. Will help you to take your business from manual to digital. So yeah, thank you all for joining today. Thank you for spending the Sunday morning with us, and we really enjoyed Chetan bhai. And yeah, we'll keep informing you about upcoming events, and have mentioned couple of links on the chat section. You can copy it from there to take membership from RMA. Thank you all. Thank you so much.